just first question. Two particles A and B are moving as shown in the figure. Their total angular momentum about the point O is. So we want to find out the total angular momentum of this point O. And it's given that there are two particles A and B, where A is actually moving in this direction. ये जो डायरेक्शन यहाँ पे लिख रहा है, उस डायरेक्शन में ये A पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और उसका जो डिस्टेंस है वो पॉइंट से ये भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो सिंपल सी बात हमको पता है ऑलरेडी कि एंगुलर मोमेंटम is already actually defined as r into p. अगर r और p ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो हमको पता है ऑलरेडी कि दोनों r और p का जो प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, वही एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम बनता है. बट ये भी हमको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. So if we turn the fingers of right hand from r bar to p bar, then you can get the answer, we can get the direction of l bar. So here you can say, okay, what क्या about, अगर ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, a पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर हमारे राइट हैंड फिंगर्स टर्न करेंगे तो हमको एक इनवर्ट डायरेक्शन मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम का. यही बार अगर सपोज हम ये r बार को आर बार से पी बार की तरफ फिंगर्स टर्न भी करेंगे इस डायरेक्शन में, तो हम देख सकेंगे कि हमारा जो थंब है वो ऑटोमेटिकली इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा, और उसकी वजह से हम देख पाएंगे कि जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का, इट शुड बी इनवर्ट्स. इफ वी टर्न द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम दिस, अगर इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर हम हमारे फिंगर्स टर्न करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा जो कि एक्चुअली क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा. इसकी वजह से ये जो थंब है हमारा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जो कि एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा इस केस में. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पॉइंट बी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण आउटवर्ड्स है, जबकि पॉइंट ए का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रहे होने के कारण वो इनवर्ड्स है. और इसलिए उन दोनों के जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है, और डायरेक्शंस अपोजिट होने के कारण हमको इनके जो एंगुलर मोमेंटम है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और इसलिए हम इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमको फाइनल आंसर मिलेगा. तो सिंपली यू विल हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ द पार्टिकल्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज MVR एज वी नो इट. तो MVR भी अगर यूज करेंगे तभी भी चल जाएगा. फाइनल एंगुलर मोमेंटम हियर L इज गोइंग टू बी L1 minus L2, or the magnitude of this final angular momentum is going to be the difference of L1 and L2. तो L1 और L2 निकालने के लिए हमको पता है ऑलरेडी ये जो है MVR, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो M1 V1 into R1, ये हो गया L1 minus M2 V2 into R2, ये हो गया हमारा L2. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा M1 के बदले हम डाल देंगे 6.5, और V1 के बदले देंगे उसका जो वेलोसिटी है 2.2, एंड R1 के बदले आ जाएगा तो उसका डिस्टेंस है 1.5. तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस M2 जो है वो B का मास 3.1 जो कि यहाँ पे लेके रखा है, इनटू जो V2 है उसका वेलोसिटी 3.6, और उसका जो डिस्टेंस है वो है 2.8. तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे तो हमको इससे एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस. तो इसमें से 6.5 into 2.2 into 1.5, और ये आ रहा है 3.1 into 3.6 into 2.8. Just we can multiply, we'll just work it out, and the answer will be 9.8. Okay, and obviously इस डायरेक्शन, यहाँ पे तो वैसे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं डायरेक्शन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस फिगर. The next one is, you can say, the mass is world
in a circular path with a constant angular velocity and its angular momentum is L. If the string is halved, keeping the angular velocity the same, then angular momentum will be. तो हम समझ सकते हैं कि mass is whirled in circular path with constant angular velocity and its angular momentum is L. So what must be the angular momentum in that case is I into omega, where you know that I is nothing but when a single mass is revolving in a circular motion, then moment of inertia of that single particle can be written to be equal to mr square simply. तो ये हमको मिल जाएगा m into r square into omega as it is. और जब यहाँ पे the string is now halved, तो जब ये string आधा किया तो उसकी वजह से क्या होगा हम समझ सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को कुछ नहीं किया लेकिन स्ट्रिंग को सिर्फ हमने आधा कर दिया है. तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं जैसे हम स्ट्रिंग आधा करेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे L है. तो अगर वो R या चलो स्ट्रिंग का लेंथ अगर R है तो स्ट्रिंग का लेंथ अगर R/2 हो जाता है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि M इंटू यहाँ पे आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा and hence you can say this will become m r square omega upon 4. And since this m r square omega is already L, then you can say that this L dash जो नया न्यू एंगुलर मोमेंटम जो है वो जो बनेगा तो वो रहेगा L upon 4. Simply you can say the angular momentum depends on moment of inertia and angular velocity. Out of that, angular velocity is going to be the constant. But since moment of inertia depends on radius square actually, so and radius अगर आधा कर दिया तो उसकी वजह से जो radius square है वो 1/4 हो जाएगा और उसकी वजह से angular momentum भी 1/4 हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे L/4 हमको आंसर मिल जाएगा. We can talk about the next. A body rolls down an inclined plane. Its kinetic energy of rotation is 50% of kinetic energy of translation. Then the body is. तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इन दोनों का जो रेशियो होता है हमने कल भी बात की थी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है वो एक्चुअली k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हुआ करता है. जैसे कि हम जानते हैं ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है. और जबकि यहाँ पे जो दिया है तो इससे हमको पता चल रहा है कि रोटेशनल मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी है is 40% of kinetic energy of translation. तो इसका मतलब ये जो रेशियो है kinetic energy of rotation to translation ये 40%, इसका मतलब वो 40/100 है. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 से तो वो बन जाएगा 2/5. और जैसा कि हम जानते हैं 2/5 वैल्यू ऑफ k square by r square is 2/5 for a sphere, solid sphere. So we can say that it must be the solid sphere because its ratio of k square by r square comes out to be 2/5. So we can say that this C is going to be the correct answer. The next question we can talk about. A solid cylinder rolls down without slipping down an inclined plane of height h. The velocity of cylinder when it reaches the bottom. उसके लिए भी हमको पता है already कि whenever a cylinder or any circular object rolls down an inclined plane तो उसका जो velocity वो अटेन करता है यहाँ पे आने के बाद तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से v is equal to root of ये जो रूट है root of 2gh upon 1 plus k square by r square. This is going to be the formula for finding the velocity of body which is rolled down in inclined plane. और ये भी हमको ऑलरेडी पता है यहाँ पे 2gh तो वैसे ही रहेगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है k square by r square के बदले क्या आएगा. जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड सिलेंडर इज सेम एज डिस्क के जैसे ही होता है और उसके लिए जो है डिस्क के लिए k square by r square का जो वैल्यू है वो हमने कल देखा था इट्स ऑलवेज इक्वल टू हाफ. एंड इफ वी पुट इट हियर देन वी कैन गेट दिस एज 1 plus half which is going to become 3/2 and hence it will become 2gh upon 3/2. And if we solve this further then we can get this as 4gh upon 3 which is there in this option.
B. At the same time, if we want to suppose find out the moment of the velocity gained by this is or sphere, solid sphere अगर ये होता था, तो solid sphere के केस में हमको क्या करना था? Solid sphere के लिए हमको यहाँ पे ये 1/2 जहाँ पे हमने डाल दिया k square by r square का जो वैल्यू है, उसके बदले हमको 2/5 डालना चाहिए था, तो उससे हमको solid sphere का जो मोमेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मिल जाता है. Next is about if Earth were to suddenly contract to half of its present size without any change in its mass, then the duration of the new day will be. So we will say Earth is going to be contract to half of the present size. So इसका मतलब radius of Earth is going to become half. So new radius r dash will be the half of original radius, or we can say r/2. तो ऐसे केस में न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना होगा वो दिखाने के लिए हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना पड़ेगा, जो कहता है कि आई ओमेगा इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो आई ओमेगा कांस्टेंट है, और इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओमेगा हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पीरियड, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे मींस पीरियड. इसलिए फिर यहाँ पे आई जो है वो स्फीयर अर्थ इज अ स्फीयर होने के कारण यहाँ पे स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे लग जाएगा, जो कि 2/5 mr² है, और ओमेगा के बदले यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा 2/2 बाय कैपिटल टी, टी इज गोइंग टू बी द पीरियड, और ये एक्चुअली कांस्टेंट बनेगा, जिसका यूज करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे अब चलो मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स अ कांस्टेंट, एंड रेडियस इज ओनली गोइंग टू चेंज, एंड हेंस बाकी सब तो कांस्टेंट्स है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि r² अपॉन t is simply going to be a constant, because mass is constant and what is a 2 pi and 2/5 m सभी constant है, और इसकी वजह से बचते दो ही वेरिएबल्स है r² and t. So we can say that this t is simply directly proportional to r², and since t is directly proportional to r² and this r is going to become half, तो अगर r आधा हो गया तो ऐसे केस में t जो r² के साथ प्रोपोर्शन में है वो क्या बनेगा, तो वो जो है t डैश जो है वो सिंपली t/4 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा. पीरियड जो है वो 1/4 मतलब ही अभी ऑलरेडी पीरियड जो है वो 24 आवर्स है, तो पता है ऑलरेडी अर्थ का, और वो अगर 1/4 हो गया तो उसके कारण यहाँ पे 4 से डिवाइड होने के बाद सिंपली 6 आवर्स बन जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर वेयर इन सी. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट disk of moment of inertia 9.8 by pi square kilogram meter square is rotating at 600 rpm. If the frequency of rotation changes from 600 rpm to 300 rpm, then what is the work done on it? So here is this case where we have to use the work energy theorem, which tells us simply that the work done by any body is always equal to its change in rotational kinetic energy, which is kf minus ki, we can say. So here we should find it out. kf minus ki हमको फाइंड करना होगा यहाँ पे, जिसमें kf का फॉर्मूला है, तो kf का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ आई, ये ओमेगा मतलब ओमेगा एफ होगा एक्चुअली, which is the final angular velocity, and here it will be the initial angular velocity और उसका भी स्क्वायर, जिससे हमको मिल जाएगा half I is going to be common and we are left with inside the bracket omega f square minus omega I square, and if we simplify this further then we can get this as half I is going to be 9.8 by pi square, तो यहाँ पे ये 9.8 upon pi square आ जाएगा. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये जो है ओमेगा कैन बी expressed in terms of frequency, and if we use this omega f as 2 pi nf, where nf is the final frequency and omega I can be replaced by 2 pi into ni, where ni is going to be the initial frequency, then we can get that this is going to be 4 pi square into nf square
minus, here it is 4 pi square into ni square, and then we can take this 4 pi common, 4 pi square common, and whatever we are left inside is, so half as it is, 9.8 upon pi square as it is, and 4 pi square taken common, and what we are left inside is nf square minus ni square, where nf is given to be 600 rpm. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं nf is, sorry, ni is given to be 600 rpm. तो rpm को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज में by dividing it by 60. तो 600 divided by 60 comes out to be 10 hertz. And in the same way, nf, that is the final frequency, comes out to be 300 divided by 60, which is going to be 5 hertz. So we can replace them here. Here we can say pi square just gets cancelled, and here 2 also just get cancelled with 9.8, leaving behind 4.9 here, and we can get that 4.9 into 4 into bracket में nth square, जो कि 10 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 का स्क्वायर. तो ये हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिल जाएगा 4.9 into 4 into 100 minus 25, which is simply going to be 75. तो 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो बनता है 300, and hence 4.9 into 300 just comes out to be 5 3s are 15. Almost 1500 के आसपास आंसर होना चाहिए, 1500 से थोड़ा कम. तो दो आंसर्स 1500 से कम, कोई अगर ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आराम से. 4.9 into 3 कितना बनता है हम समझ सकते हैं, it's 147. So 1470. This will be the correct answer. Okay, if we take this 9.81, then we can get this answer correctly. So 1470. This is going to be the correct answer. So there in option A. Next, we can talk about an air compressor is powered by a 200 radian per second electric motor using a V-belt drive. The motor pulley is 8 cm in radius. The tension in the V-belt is 135 Newton on one side and 45 Newton on the other. Then the power of motor will be. तो एक सिंपल सी बात है कि जो पुली है, ये सपोज पुली है और इसके ऊपर 2 बेल्ट्स लगे हैं. समझो एक बेल्ट इस तरफ है और दूसरा बेल्ट जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और ये दोनों बेल्ट्स के अंदर अलग अलग टेंशन से दिया हुआ है. यहाँ पे बोला है कि इस तरफ जो टेंशन है वो है एक तरफ टेंशन 135 न्यूटन है. ये सपोज टेंशन 135 न्यूटन का बन रहा है, और इस तरफ जो टेंशन है वो दिया है 45 न्यूटन ओनली. तो हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों टेंशन इस तरफ काम कर रहे हैं तो ये सेंटर जो है पुली का, तो उस सेंटर के अबाउट ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न करने के लिए ट्राई करेगा. और ये जो दूसरा फोर्स है वो एक दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न करने के लिए ट्राई करेगा. लेकिन जबकि हम जानते हैं the two opposite torques just get subtracted from each other, and hence the net torque, you can say torque net torque will actually be equal to the, अभी देखिए यहाँ पे ये जो 135 न्यूटन का जो फोर्स है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 135 multiplied by the distance at which it is acting from the center, which is the same as radius of this, which is 8 centimeter given here. So if we multiply this by 8 centimeter, which is nothing but 0.08 actually, and subtract this 45 Newton torque multiplied by 0.8 इसका perpendicular distance. तो ये 45 न्यूटन का जो फोर्स है वो 45 into 0.08 इतना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो नेट टॉर्क is going to be equal to 0.08 can be taken common, and what we are left with is 135 minus 45,
which is going to be 90 actually. So that we can get the 0.08 into 90. How much is this? You know that it is 72, 720 or 7.2. This is going to be 7.2 Newton meter. And this torque is produced by this torque is produced by this air compressor, and it's powered by this 200 radian per second इलेक्ट्रिक मोटर. तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे देख रखा है 200. So omega is going to be 200. Let's say once we get torque and omega, we can use this formula for power. That is, power is equal to torque into omega, so as to get the power. And torque is 7.2. That is to be multiplied by 200, so that we can get this as 1440. इसको भी हम अगर वैट में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको अगर सपोज किलोवाट में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली हमको करना पड़ेगा 1.44 किलोवाट. Ballet dancer is rotating with velocity omega on a smooth horizontal floor. Ballet dancer folds his body close to his axis of rotation, by which his radius of gyration decreases by 1/4 of its initial radius of gyration. Then find the final angular velocity. तो उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये हमको निकालना है. अभी यहाँ पे भी हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना होगा, जो कि हम जानते हैं L is always going to be constant and L is equal to I omega. तो अगर हम यूज करेंगे तो I omega is going to be constant. इसमें हम देख सकते हैं कि I मतलब mk square हुआ करता है, तो mk square is going to be constant into omega. अभी हम समझ सकते हैं कि mass is going to be already constant, so we can say that the product of k square and omega is also going to be a constant, so that we can say that omega is inversely proportional to k square, where it's already given here that the radius of gyration, k, decreases by 1/4 of its original radius of gyration. K dash is going to be k minus 1/4 of k. ये उसका मतलब है. तो जो radius of gyration है, it is decreased by 1/4 of its original value. Means 1/4 decrease हो गया, तो बचेगा कितना? तो वो बनेगा k minus 1/4 of k, मतलब वो बन गया 3/4 of k. करेक्ट है. और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जब कि k dash 3/4 of k बन गया, तो मतलब ओमेगा डैश जो है, ओमेगा डैश 1/3/4 का स्क्वायर के बराबर टाइम्स बनेगा. और इसलिए हम ओमेगा बोल सकते हैं ओमेगा डैश इज गोइंग टू बिकम 16/9 times of omega, and this is going to be the final answer which is there in this option 4. Yes, the circular disc of mass 3 kg is rotating freely in horizontal plane about vertical axis, passing through its center and at the rate of 2.4 rotations per second. Two bodies, each of mass 0.5 kg, are gently attached to the rim of the disc, due to which the radius of gyration increased by 20%. Then its angular velocity is. So at the same time, you can see circular disc of mass 3 kg is rotating with the in horizontal plane about its vertical axis, passing through its center at 2 rotations per second. So उसका initial angular velocity जो है omega, you can say it is going to be 2.4 rotations per second. Okay. Two bodies, each of mass 0.5 kg, are gently attached to the ring of the disc, due to which its radius of gyration increased by 20%. तो अगर radius of gyration बढ़ता है 20% से, तो अभी हम जानते हैं यहाँ पे कि in case of the circular disc rotating freely, no external torque acts on it, and that's why the angular momentum will remain constant. So we can say I omega is going to be constant. So that we can say I मतलब mk square and omega as it is, which is going to be a constant. And we can say that m is constant already. And even we can just replace this omega also by this mk square into
ओमेगा के बदले रिप्लेस कर सकते हैं 2 by n, where n is going to be the frequency. तो ये बन जाएगा 2 by n, that is going to be a constant. But as we know that m is constant already and 2 pi is constant, so we can say that n into k squared is going to be again a constant, which simply says that n is going to be inversely proportional to k square. n मतलब frequency, it is going to be inversely proportional to k square, where k is going to be the radius of gyration. जबकि यहाँ पे बोला है कि radius of gyration is increased by 20%. तो अभी यहाँ पे k dash जो है it is going to be k plus 20% of k. ये हमको दिया हुआ है, तो अगर हम ये बात यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा k dash is going to be equal to k plus 20%, मतलब वो बन गया k plus, तो इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इट्स गोइंग टू बी 120%, मतलब 120 by 100 टाइम्स ऑफ k, ये बन गया. इसको हम लिख सकते हैं आराम से कि k dash is going to become 1.2 times of k simply, and hence you can say that if k dash becomes 1.2 times of k, then n dash, the new frequency of rotation, must become 1 upon 1.2 whole square times of n, because n is inversely proportional to k square. So if we use it here, then we can get that. So here it is, n dash is going to be equal to 1 upon 1.44 times of n. So you can solve this and get that n dash must be equal to n. n कितना है हमको पता है already, it is 2.4 rotations per second. तो यहाँ पे आ गया 2.4 upon 1.44. This is going to be in rotation per second. But if you want to find out it in rotation per minute, as you want it in the options, so you can just multiply this by 60 and get this frequency, final frequency, to be 2.4 upon 1.44 multiplied by 60. इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो रोटेशन पर मिनट में आ जाएगा. अभी जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है 12 के ये दोनों फैक्टर से, तो 12 से अगर 2 बार रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे आ जाएगा 12 से रिड्यूस करने के बाद 0.12 और इसको भी, इन दोनों को भी अगर 12 से रिड्यूस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.01. So here it will be simply 5, and hence the final answer is going to become n dash equal to 0.2 into 5 divided by 0.01, and hence it becomes 0.2 into 5 मतलब 1. So 1 upon 0.01, which comes out to be 100 simply. So 100 RPM, which is there in this option, 105 approximately. Unit of mass 50 gram is projected upwards with initial velocity of 200 meter per second in the direction of angle of projection 60 degree. And the angular momentum of the bullet when it is crossing highest point with respect to the point of projection is, यहाँ से हमने एक बुलेट प्रोजेक्ट किया ऊपर के डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल थ्रो करके, तो यहाँ पे जब वो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो होगा तो its velocity will be obviously horizontal and momentum also will be horizontal, and we can say at that point about the origin the angular momentum can be found out easily by just using the simple definition of angular momentum, that is linear momentum multiplied by perpendicular distance. So if you want to find out the perpendicular distance, then we can just extend this line of action of angular momentum backwards, and this distance actually will become the perpendicular distance, which is same as h here, जो कि प्रोजेक्टाइल का हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट हुआ करता है. तो ये मैक्सिमम हाइट हमको निकालना होगा प्रोजेक्टाइल का और उसको मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमको ये इसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाए. तो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला itself is going to be equal to the height at the highest point multiplied by the
momentum, linear momentum of that point at highest point. And height के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, height of projectile is u square sin square theta upon 2g. ये फॉर्मूला है रेडीमेड, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है मोमेंटम के साथ, where momentum is going to be m into p. और ये भी हम जानते हैं फिजिकल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर यहाँ पे u इसका वेलोसिटी है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा तो वो एक्चुअली रहेगा u cos थीटा. तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होता है, और पूरे पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है. तो ये बात अगर हम समझ के लेंगे तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो एक्चुअली u cos थीटा ही होगा. और अगर ये बात हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू m इंटू v मतलब यहाँ पे है u cos थीटा. और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा m इंटू u क्यूब, ये बन गया m u क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा into cos theta divided by 2g. And then we can just solve this further, and so that this will be m. m मतलब कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी, it is 50 ग्राम. 50 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.05 किलोग्राम. ये बन गया into u क्यूब. u का जो वैल्यू है वो हमको देके रखा है 200 मीटर पर सेकेंड. 200 मीटर पर सेकेंड का जो क्यूब है वो हो गया 8 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड क्यूब. तो ये हमको मिल गया. और फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 60, because theta is already given to be 60, and cos theta is again given to be 60, so we can get this as cos 60 here also. And then we can just solve this further. 2 into take g as 10, and hence you can get this as, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये मिल जाएगा 0.05 into 8 comes out to be 0.4 into 10 raised to 6 as it is, and sin square 60, sin 60 is root 3 by 2, so its square is going to be 3 by 4, which is 3 by 4, and cos 60 is going to be 1 by 2 here. So that, and divided by 2 into 10. इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे 30,000 अपॉन 4, तो मतलब वो बन गया 75,000. इसको भी हम लिख सकते हैं आराम से 7.5 into 10 raised to 3 kilogram meter square per second, which is there in the option 2. A thin metal rod of length 0.6 meter is vertically straight on a horizontal floor. This rod is falling freely to the side without slipping. The angular velocity of rod when its top end touches the floor is, तो हमको ये समझना है कि suppose there is a rod which is kept vertical like this. ये समझो इस टाइप से रॉड है, और उसको हमने सपोज थोड़ा टच किया, जैसे वो हम इसको डिस्टर्ब करेंगे वर्टिकल पोजीशन से, तो इट विल गो ऑन फॉलिंग डाउन, एंड इट विल जस्ट try to fall down like this, and as it goes on falling down, its angular velocity will go on increasing just because torque due to gravitational force acts on it continuously. इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क काम करता है, और जिसकी वजह से वो नीचे इस तरफ गिरता जाएगा, और जब वो यहाँ पे रहेगा
इस समय यहाँ पे टच करेगा, उसका दूसरा एंड यहाँ पे टच करेगा, तो उस समय उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये हमको ढूंढना है, ओमेगा हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि जब ये रॉड यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर सपोज इसका हम एक टिल्टेड पोजीशन अगर देखते हैं, ऐसा अगर पोजीशन हम देखते हैं, तो किसी भी पोजीशन में अगर ऐसा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ये फोर्स काम करेगा, इस रॉड का जो वेट है, और इस वेट की वजह से जो टॉर्क बनेगा, तो वेट का जो टॉर्क है वो हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं आराम से, बिकॉज उसके लिए हमको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो इस वेट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, ये हम अगर ले लेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमको ये टॉर्क मिल जाएगा। और ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि टॉर्क इज नॉट अ कांस्टेंट वन हियर, बिकॉज as this rod will go on falling more and more, the perpendicular distance will go on increasing continuously and it will become maximum L by 2 finally. तो इसलिए यहाँ पे टॉर्क वेरिएबल है, और ऐसे वेरिएबल टॉर्क के द्वारा जो किया हुआ जो वर्क डन है, तो वो हमको अगर निकालना है तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं आराम से। और इसकी वजह से हम यहाँ पे यही प्रिंसिपल यूज करेंगे कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of the rod is going to be the work done by gravitational force. Net work done by gravitational force when this rod is shifted from this vertical position to the horizontal position. ये भी हम समझ सकते हैं कि when this rod is vertical, the center of mass of the rod is at a height L by 2 from its bottom. तो यहाँ से वो L by 2 इतने डिस्टेंस पे रहा होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जबकि जब ये रॉड गिरता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी of the center of mass of the rod when the rod falls from vertical position to horizontal position is going to be the mass of the rod m into g, that is gravity, into L by 2, where h is going to be L by 2 here. तो इसलिए ये बन गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट जबकि यहाँ पे ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट विल अपीयर इन द रॉड एज अ काइनेटिक एनर्जी। सो सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड इनिशियली इज गोइंग टू बी जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी half I omega square. So we can say that the total kinetic energy gained, rotational kinetic energy gained in the rod will be given by the formula half I omega square, where I is going to be the moment of inertia, which is अभी रॉड जो है इस एक पॉइंट से अबाउट रोटेट हो रहा है, the rod is rotating about one end point, and that's why its moment of inertia will be given by the formula, which is the formula for the moment of inertia of a rod about one end point, which is ml square by 3. ये formula हमको पता ऑलरेडी कि whenever a rod rotates about its one end, then the formula for moment of inertia becomes ml square by 3. And if we replace it here, then we get the total kinetic energy obtained by the rod will be equal to half of ml square by 3 up into omega square, where omega is going to be the angular velocity that is gained by the rod at this point here. And if we equate these two, तो अगर हम potential energy का loss और kinetic energy का gain अगर हम equate करेंगे, तो उससे हमको ये ओमेगा निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा m into g into L by 2, which is going to be equal to half m into L square by 3 into omega square, so that m gets cancelled from both sides, and you can say L also gets cancelled once. तो ये L एक बार अगर कैंसिल हो गया तो हमको मिलेगा यहाँ पे g इस तरफ बचा है g by 2, और उस तरफ बचा रहेगा 1/6 of omega square L omega square, तो 1/6 of L into omega square. And this, if we solve this further, the next step becomes omega square is equal to, ये अगर 6 इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 6g upon 2 into L, and this becomes the omega square. But then omega can be written to be equal to root of this whole thing. But as we know that this 6 by 2 is going to be 3, and hence we can get this as 3g
upon L. And if we simplify this further, then we can get this as 3G. G is taken as 10. अब चलो 9.8 भी ले लेंगे तो भी चलेगा. So ये suppose 9.8 है. That is to be divided by 6, 0.6. तो ये बन गया 0.6. तो अगर हम पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 into 9.98. That is to be divided by 6. And if we reduce this, 6 1 3 ones are and 3 twos are, so that we get this as root of 98 by 2. मतलब ये root of 49, which is going to be 7 radian per seconds will be the angular velocity, which is there in this option 1. A uniform mass, a uniform cylindrical rod of mass m and length L is rotating with an angular velocity omega. The axis of rotation is perpendicular to the axis of symmetry and passes through one of its edge faces. Okay. If the room temperature increases by T and coefficient of linear expansion is alpha, then what is the change in angular velocity? इसका length L दिया हुआ है, mass m दिया हुआ है, और उसका angular velocity जो है वो ओमेगा दिया हुआ है. Axis of rotation is passing is perpendicular to its axis of symmetry. मतलब ये उसका axis of symmetry होता है, इसको perpendicular मतलब axis of rotation must be like this. This is going to be the axis of rotation about which this rod is going to rotate, and passing through one of its edge faces. मतलब एक end point में से वो pass हो रहा है. If the room temperature increases by T, अभी देखो यहाँ पे temperature increase होने से इस rod के length में क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने थर्मल एक्सपेंशन में ऑलरेडी देख के रखा है कि whenever the temperature of a rod increases, there is a change in length, and we can say that the change in length actually is equal to alpha into L, that is original length, multiplied by T, that is the change in temperature, where alpha is going to be the coefficient of thermal expansion, linear expansion. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि इससे हमको पता चलेगा कि डेल्टा L अपॉन L is going to be equal to alpha into T, जिससे हमको पता चलता है कि fractional change in the length dl अपॉन L भी उसको लिख सकते हैं हम, जो कि यहाँ पे अल्फा इंटू टी के बराबर बनेगा. और इसकी वजह से हम देख सकते हैं अगर dl अपॉन L हमको मिल गया तो इसकी वजह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा वो जानने के लिए हमको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना पड़ेगा. सिंस एंगुलर मोमेंटम is equal to I into omega, and we know that no external torque is acting on this whole system, so that we can say that angular momentum must be conserved. So angular momentum conserve होने का मतलब है I into omega must be constant. तो अगर ये constant हो गया, और ये भी हम जानते हैं ऑलरेडी कि I जो है यहाँ पे एक एंड पॉइंट के अबाउट घूमने की वजह से moment of inertia of this rod will be given by the formula m into L square by 3. No doubt. अभी यहाँ पे मास में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, बाकी 3 भी कांस्टेंट है, तो इसमें ओमेगा जो है we can say that omega is going to be inversely proportional to L square simply, and since L के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज है वो यहाँ पे अल्फा टी आ रहा है, इसकी वजह से we can say that delta omega d omega by omega is going to be equal to simply minus 2 times of dl by L. मतलब जितना भी फ्रैक्शनल चेंज लेंथ में आएगा उसका डबल फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे ओमेगा के अंदर आएगा. तो ओमेगा के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा डी ओमेगा बाय ओमेगा जो है वो एक्चुअली बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, माइनस साइन जो है वो सजेस्ट करता है कि अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, वो तो वैसे भी होने वाला ही है. तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ dl by L मतलब ही अल्फा टी, एंड हेंस यू कैन से दैट दिस विल बी simply d omega by omega equal to 2 alpha t. So double fractional change यहाँ पे आ जाएगा, which is there here in the option number 1. Let's read this question. Particle performs uniform circular motion with an angular momentum L if angular frequency f of the particle is doubled and kinetic energy of the particle is halved.
its angular momentum becomes. यहाँ पे हमको ये देखना है कि एंगुलर मोमेंटम L, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि ओमेगा, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है तो वो हमको समझना है। जैसे कि हम जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशनल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जैसा कि हमने कल भी किया था कि अगर आई ओमेगा इंटू ओमेगा ऐसे अगर इसको लिख देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा अगेन, so that this I into omega becomes L. So we can say that the kinetic energy of rotation actually becomes equal to half of L into omega. And then we can just express this L as K, actually 2K upon omega. Now we can just think about this question. तो अब यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ठीक से तो angular frequency of the particle is doubled. तो ये जो omega है it's going to become double, 2 times होने हो जा रहा है। और यहाँ पे जो के दिया है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो इसका मतलब ये जो के है इट इज गोइंग टू बिकम हाफ। तो के आधा हो गया और ओमेगा अगर 2 टाइम्स हो गया तो उसकी वजह से एल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इट विल बिकम 1/4, एंड हेंस दिस एल डैश, दिस न्यू एंगुलर मोमेंटम विल जस्ट बिकम L/4 simply. So that is going to be the option number 4. Let's read this one. A circular disc of radius r and thickness r/6 and has moment of inertia I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Okay, the disc is melted and recasted into a sphere. The moment of inertia of that sphere about its diameter is, तो सपोज अभी एक सर्कुलर डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, उसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है r, this is going to be r, and its thickness is given to be r/6, ये r/6 दिया हुआ है। तो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिया हुआ है I। ओके, तो अभी उनको ढूंढना ये है कि अगर ये डिस्क जो है उसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया एक स्फीयर के अंदर, तो वो स्फीयर जो बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट द डायमीटर, ये हमको ढूंढना है। तो अभी सिंपल सी बात ये है कि whenever the disk is melted and recasted, what happens is mass remains constant, or you can say volume also remains constant, and hence you can see the volume of disk must be equated with the volume of solid sphere. तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है और डिस्क का जो वॉल्यूम है वो इक्वेट हमको करना है। अभी जैसा कि हम जानते हैं डिस्क का जो वॉल्यूम है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। तो यहाँ पे लेकिन पाई इंटू आर जो है वो आर यहाँ पे स्क्वायर रेडियस उसका, और h मतलब यहाँ पे r/6 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा r/6। तो अगर यहाँ पे रख देंगे तो इसको हम लिख सकेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अभी यहाँ पे हमको वॉल्यूम का जो रेडियस है वो दिया नहीं है, इसको हमको बोलना पड़ेगा सपोज इट इज स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर बोल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 into pi r cube, फिर r is going to be the radius of sphere which is going to be found out। तो वो निकालने के लिए हम यहाँ से pi कैंसिल कर देंगे सबसे पहली बार, और यहाँ पे आ जाएगा r³/6 is equal to 4/3 into small r cube। इसको सॉल्व करने के बाद ये अगर सपोज ये 3 1s एंड 3 2s अगर रिड्यूस करते हैं तो इसमें से हमको मिल जा रहा है r³ स्मॉल r cube is equal to कैपिटल R³ अपॉन 8। इसका क्यूब रूट निकालने के बाद हमको ये मिल जाएगा, तो क्यूब रूट निकालने के बाद हमको मिलेगा r स्मॉल r is equal to कैपिटल R/2, and then we can be able to use find out the moment of inertia of that sphere। जबकि उसका मास सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर I dash will be actually equal to, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला ही है,
Okay, one more thing is that the moment of inertia of the solid cylinder is given already. तो इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, तो ये I किसके बराबर रहा होगा? जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है mr² upon 2, simply because its cylinder can be considered to be similar to a disk, solid disk, and that's why you can get this as mr² by 2, and this is value of I. That is the moment of inertia which is given here as a moment of inertia here. Next is about the solid sphere. तो solid sphere का जो moment of inertia है उसको अगर हम I dash बोल देते हैं तो I dash is going to be equal to 2/5 of, क्योंकि फॉर्मूला है solid sphere का moment of inertia के लिए 2/5 of mr². तो ये बन गया m into, लेकिन r sphere का आपको यूज करना पड़ेगा, स्मॉल r. ये मास जो है वो हमने इसका ही यूज किया तो भी चल जाएगा क्योंकि मास इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज दिस disk itself is melted and converted into the sphere, so mass doesn't change, mass will remain the same, but radius will definitely change and this will become smaller, and that's why the moment of inertia now will become 2/5 into m into r², where r is going to be r/2 here. So if you replace it by that here, then we get this as r/2 का whole square. यहाँ पे अगर हमने r/2 का होल स्क्वायर अगर डाल दिया तो वो हमको मिल जाएगा 2/5 into m into r²/4. ये r²/4 बन गया. इसमें से 2 को अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा mr²/10. And again, so just wait. अगर इसको हमने यहाँ पे mr²/2 को अगर वैसे ही रखा तो ये बन जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ mr²/2. जबकि mr²/2 जो है वो रेडीमेड हमको मिल रहा है एज I. तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं I is going to be mr²/2. तो अगर हम उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा I/5 एज ए फाइनल, which is there in option number 3.